Knowing why AI struggles to generate accurate code will make you a better engineer than reading prompting techniques. तो रिसर्च ने एक टेस्ट कंडक्ट किया where they analyzed the errors in all large language models. Total 558 incorrect code snippets were identified. उन लोगों ने एनालाइज किया और कैटेगराइज किया द इनकरेक्ट कोड स्निपेट्स to look for patterns like task type, model size, prompt length, or more. Common issues in large language model code generations: logical errors, incomplete code, context misunderstanding. They group them in two types of error. एक है सेमेंटिक और एक सिंटैक्टिक. तो फर्स्ट समझते हैं सेमेंटिक एरर को. सेमेंटिक एरर are high level of logical mistakes that reflect the model's misunderstanding of task requirements. एग्जाम्पल जैसे बोल सकते हैं गार्बेज कोड, मेमोरी एरर्स, कंडीशन एरर्स, रेफरेंस एरर्स, इनकम्प्लीट कोड, कैलकुलेशन एरर्स, कांस्टेंट वैल्यू एरर. तो सेमेंटिक एरर्स का टेक अवे है सारे ये फेस करते हैं फ्रीक्वेंट इशू जनरेटिंग कोड. भी परफेक्ट नहीं है ये जो जनरेट कोड जो कोड जनरेट कर पाए. स्मॉलर मॉडल्स टेंड टू जनरेट मोर मीनिंगलेस एंड missteps. But larger models like GPT-4 like to run into issues related to constant values and arithmetic operations. So syntactic errors देखते हैं अपन. Syntactic errors are specific code errors that indicate issues in structure and syntax. तो एग्जांपल जैसे कि लूप एरर, रिटर्न, इंपोर्ट एरर, कोड ब्लॉक एरर, कंडीशन एरर, मेथड कॉल एरर, असाइनमेंट एरर. इनसे टेक अवे है कि कॉमन इशू है कि मोर देन 40% ऑफ द सिंटैक्टिक एरर्स made by all large language models can be grouped into missing code block and incorrect code block. तो गाइस हम लोगों ने यह स्ट्रगल क्यों करता है कोड जनरेट करने में ये सीखा. अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक एनी एआई और चैट जीपीटी जनरेट कोड बेटर. तो माय फेवरेट पार्ट ऑफ द पेपर था कि एनालिसिस ऑफ हाउ प्रॉम्प्ट लेंथ अफेक्ट द सक्सेस ऑफ एनी एआई इन जनरेटिंग करेक्ट कोड. तो ये ग्राफ है रिलेशन बिटवीन प्रॉम्प्ट लेंथ और पास और फेल रेट. तो इसके टेकअवेज है कि इफेक्ट ऑफ प्रॉम्प्ट लेंथ. Prompts under 50 words generally lead to better performance. Prompts over 150 words lead to more errors. Types of error in long prompt. 64% of errors in long prompts result in unnecessary code. 37.5% of errors were syntactic code but failed to address the required task. Some long prompts resulted in code consistency of only comments. Application देखते हैं. Longer prompt is not equal to better prompt. बट नॉट ऑल लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स आर बैड. लॉन्ग प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोग फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं. फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग फीड करते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन है कि यूज कंसाइज एंड फोकस प्रॉम्प्ट्स. और थर्ड एप्लीकेशन है प्रोवाइड क्लियर एंड स्पेसिफिक टास्क डिस्क्रिप्शन. एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मत दो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दे दो. स्मॉलर मॉडल्स ऑफन जनरेट मीनिंगलेस कोड बट आप इसको इम्प्रूव कर सकते बाय फाइन ट्यूनिंग और स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स आपके हिसाब से. Or you can just use a larger model. Larger models like GPT-4 were more accurate, but they still have had issues. When they failed, they were often incorrect, requiring many lines of code to change. So researchers ने measure किया the errors by how far generated code deviated from the correct code using two metrics. एक जैकेट सिमिलरिटी मेजर करता है टोकन्स ओवरलैप बिटवीन स्निपेट्स, फीवर कॉमन टोकन्स इन लेस एक्यूरेट कोड. और सेकेंड है लेविंगस्टन डिस्टेंस, measure the number of edits needed to correct the code. Lower the value means fewer changes are needed, indicating that the generated code is closer to the correct solution. GPT 3.5 and GPT-4 had the largest difference when generating incorrect code. Although they were accurate, पर जब ये रॉन्ग होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है. The main takeaway is that most error was single hunk or multi hunk, meaning they weren't simple fixes. So hunk मतलब several lines of code. Large language models will keep improving at code generation, but for now there will be still some issues to be handled, especially when deploying code generation